Hello, good evening, everyone. I would like to welcome all of you for joining this webinar. I hope you all are safe at home with your all family members. Myself, Mukesh Batra, working as a MD and CEO with House Seekers India Private Limited. We are international property consultant and working with all A-grade developers from past 3 years. We have our business spread across Mumbai, Delhi, and Pune. And right now we have more than 500 happy customers. If I talk about House Seekers India Private Limited is a fastly growing technology-driven company. Our aim is to enable home buyers to make the right choice at right time. We always wish to make home buying journey very simple and memorable for all our customers. And we achieve it by our and through assistance. Our valuable team of experts always guide to all our customers to make an intelligent and good choice when it comes to buying a home. We provide with the right advice based on your requirement with the support of our property search algorithm, which is already implemented in our software. At House Seekers India, transparency is the key to foster a culture of trust and understanding with every home buyer who walks in through our doors to seek our trusted service. Our thorough and meticulous process always minimizes the risk of investing in the wrong project, and we never charge any single rupees from our customer. This is a brief about our company. So before starting, I would like to introduce our keynote speakers. Mr. Sachin Bansal is Vice President in Sales at Lodha Amara Thane. Welcome, Mr. Sachin. Thank you. And Mr. Vivek Nair is Assistant Vice President in Sales at Lodha Amara Thane. Welcome, Mr. Vivek. Thank you, Mukesh. So before proceeding, I want to explain the process, how we are going to move. Firstly, I will ask few questions from Mr. Sachin Bansal on current situations of the market. Then after that, I will ask realty expert, Mr. Vivek Nair, to explain about the offers from Lodha Group in Lodha Amara project, which is located at Kolchit Road, Thane. In last, our realty expert will answer all our customer questions. If any questions left, then our sales team will connect with all of you to address your query. So, Mr. Sachin, would request you to please explain to all our customers about Apna Ghar Apna Desh campaign. We all know Lodha Group is doing campaign, and Bollywood star Mr. Akshay Kumar is doing this campaign, Apna Ghar Apna Desh. If you can explain about this campaign to all our customers, then it will help us to understand what exactly it is. Sure, Mukesh. So if you really look at the current scenario, what is the current scenario? Current scenario is that the economy has come to a halt. We are all locked down in our houses, right? And there has never been I think, better realization that we should have a very good house. That house is finally where we should be, right? This is our ultimate heaven for us on earth. So we should have a high quality house. So I think keeping that in mind, keeping the economy which has to really come up, economy which has to go up in a V shape from here on, I think realty as an option provides 8% of GDP to the country. And keeping all that in mind, we have come up with the best offer wherein you don't have to give enough cash flow to the company, to the developer, and still own a home. So your cash flow, why do you delay your decision to buy a home? Essentially is that you are afraid that I'll be giving up a lot of money on down payment. My EMI is going to be very high. So keeping all that in mind, we have designed a product
which not only takes care of all those of your concerns, which Vivek will point to you once he talk about the PPT, but also it is for the nation building that we are also contributing 21,000 rupees in the PM Care Fund. So it is that we have to start the nation. We require, I think this pandemic has taught us that we require a house, and the Lodha is making it possible for you to buy that house with minimum cash requirement of today and minimum cash requirement of the future. So all those things have been taken care in Apna Ghar, Apna Desh, Mukesh, and I think Vivek can point out in PPT further how it is actually going to be happening. So I want to show a video of Apna Ghar and Apna Desh Bollywood star Mr. Akshay Kumar is doing. So I want to show the video to all our customers. Then after video, again I will request Mr. Sachin to explain how Lodha is supporting in this campaign. अरे भाई तू उसके लैंडलॉर्ड से बात तो कर, आई एम श्योर वो समझेगा, तू फिक्र मत कर। एक दोस्त का फोन था, उसका भाई थोड़ा रेंट को लेकर परेशान। उसकी सिचुएशन सुनकर अपना पुराना समय याद आ गया। साइन कोलीवाड़ा का वो मकान जहाँ सालों तक अपने परिवार के साथ किराए पर रहा, पर उसे कभी घर इसलिए नहीं माना क्योंकि वो सिर्फ एक मकान था। और आज जब इस घर को देखता हूँ तो एक सुकून सा मिलता है, ये सोच के कि ये जो घर है ये अपना घर है। सब कुछ है इस घर में, मेरा प्यार, मेरे परिवार की सुरक्षा, मेरे बच्चों का बचपन और माँ का आशीर्वाद। आज जब पूरी दुनिया को ये कहा गया है कि सब अपने घरों में रहेंगे, तो इस बात का एहसास और होता है कि मेरे अपनों की सुरक्षा के लिए अपना घर कितना जरूरी होता है। आखिर अपना घर अपना ही होता है। अपना घर होने की खुशी अब साथ लाएगी देश की उन्नति। आओ मिलकर बनाएं अपना घर अपना देश। अरे भाई तू उसके लैंडलॉर्ड, अरे भाई Yes, Mr. Sachin will request to explain all these things. Yeah, so it is when you're buying a home, which I think is a very, I think everybody has realized wherever they are living that you require a slightly bigger home or you require a quality home. I think this is where you spend quality time. So apart from that, it's not about just buying home for yourself. You are doing a big service to the country, because 10 jobs directly or indirectly are getting created if you buy one home. For 1 year, we are, one home creates 10 direct or indirect jobs. So you are giving job to 10 people in the country, indirectly or directly, for 1 year when you buy a home. So which is a very, very big service you will be doing. Plus, there is a huge amount of taxes which company pays to government. So there is a 25% approximately in taxes which go to the government. For if we sell a 100 rupee home, 25 rupees directly or indirectly goes to government coffer, whether it is the state government or central government. And we are also, Lodha, from our own profit, we are giving 21,000 rupees to PM Care Fund. So this is in the nation building. We have to get beyond this pandemic. So essentially, it's a win-win situation for the country, for you, for us. That is what is offer about. So this is just to give you a perspective about the country, but I think we will be giving you perspective on how it is beneficial for you ever, from a best ever perspective time to buy a home. So that also we will be coming up in the future slides. Yes, Mr. Sachin, if I talk about a third point, for every home purchase, contributions of 21,000 is made to PM Cares Fund. This is the great initiative taken by Lodha Group. So few customers are asking if they book the apartment in Lodha Amara project. So जो ये 21,000 का amount है, it will be added in their cost, या Lodha Group will contribute this amount in PM Care Fund from on income? So it is going to be from the profit that we make. So suppose we make a X profit, from that we will be giving out this 21,000 rupees from that profit. So it is not charging to the customer in any way. Okay, तो मतलब Lodha Group जो है अपने income में से will contribute to PM Care Fund. Yes. Yes, it's great initiative. Thank you so much, Mr. Sachin, to explain
about Apna Ghar, Apna Desh. This is a very huge campaign and we are getting huge response because this campaign is running across all projects in Mumbai. So my next question, because we all know we are in lockdown situation, everyone is sitting at home. So if I talk about before lockdown, many people were in finalization stage. They were going to book the apartments, but immediately no one knows when lockdown will started. So people were thinking कि it will restart, yeah, we will again resume the office after 10 days, 15 days. But किसी को नहीं पता था कि ये लॉकडाउन जो है एक्सटेंड होता रहेगा, बिकॉज जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता तो इसका सोल्यूशन ही कंप्लीटली सोशल डिस्टेंसिंग है, राइट? सो many customers जो क्वेश्चन है, because we have done few webinars and many customers are asking and they always think कि इस जो ये लॉकडाउन चल रहा है and many people are thinking कि प्राइस डाउन जाएगा. So बहुत सारे क्वेश्चंस है कस्टमर्स के माइंड में. So if you can explain to all our customer कि लॉकडाउन में घर लेना, क्या this is the right time to invest in real estate? If you can share your views, if yes, this is the right time, then it will help us to our customers to take the decisions in this lockdown. See, Mukesh, just to answer your question, that you have spent 99% of your time in the last 60 days at home, right? So I think value of a home as an asset is really coming up. If you look at financial markets, there is so much of uncertainty. There is so much of sinusoidal, plus minus, which happens in financial markets. So real estate as an asset class is a very stable asset class. It gives you, it is also rent generating. Even if you are not staying, first of all, you are consuming. So there is unlimited value of you staying in your own home and having peace in your home. There is no price for peace, right? But even if you are not staying, this is a rent generating asset. So it is something which gives you return on a regular basis. So there is no question about it that real estate is going to be back in flavor. And just to give you a perspective that, finally, frankly, there are very, very few developers who are quality developers or who deliver the projects. Okay, so what about Lodha Group is that we deliver. We give out 10,000 homes across Mumbai, MMR, every year. Every year we are giving out. So it is not about, buying a home. That I think we all have realized that we have to have a home of our own. And I think people are even realizing that let's have a larger carpet home, or let's have, instead of 1 bed, let me stretch for 2 bed. Because even in the future now, the requirement will be that you might be working sometime from your home, maybe 3 times in a week from home. So home as I think is back in flavor. It is very, very important place. It is where you get peace of mind, and this people have realized. And I think there is no better time to do it, because frankly, the prices, why they will not go down, because there are very, very few homes, very, very few developers who really provide delivery, and who really provide, and the margins are very, very thin, especially in the mid-income housing that we are talking about, Amara. The margins are wafer thin for developers, frankly. It is not a luxury segment like Park or Valtars that we have, where we have high, margins. And we are trying to, I think with the Apna Ghar, Apna Desh offer now, we are even further cutting down our margins, because we are giving a lot of value, which Vivek will explain to you in the future, that how we are giving out value, where there is not much difference between the rent and the EMI that you will be paying. So why should you actually not shift to a, why should you actually not shift to to your own house, which is ready, which you can buy right now. You can move in 2 months. So, and not pay much differential between what the rent you're paying right now. And I'm sure 90% of people who are on your call, there are 100 plus participants here. And I'm sure that 90% of them will be living on rent. And, why waste your rent? Just pay little more. Now that differential is very, very low now, Mukesh, with this offer that we are giving. Yes, you are completely right. If I talk about real estate
का ही सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है इंडियन इकोनॉमी में, राइट. एंड एब्सोल्युटली यू क्लियरली सेड कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलता है. रेंट जो है आपका हमेशा जो है कॉन्टिन्यूसली आपको जो है मिलता रहता है. आई कम्प्लीटली एग्री मिस्टर सचिन. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू. You clearly told yes, this is the right time because already RBI ने जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम कर दिया है, ठीक है. प्लस गवर्नमेंट की साइड से मोरेटोरियम मिल रहा है, प्लस बिल्डर्स की साइड से जो ऑफर्स आ रहे हैं, प्लस जो रिटर्न है वो ROI जो है कंसिस्टेंट आपको मिलता है रियल एस्टेट के अंदर. So I completely agree. This is the right time to invest in real estate. But if you can explain to all our customer how real estate industry, because everyone is at home, no one knows how, because हर किसी को घर लेना है. These are the basic needs. If I talk about रोटी, कपड़ा, मकान, बिना छत के हम रह नहीं सकते. ये सबका नीड है, ठीक है. अब कस्टमर्स घर पर है, लेना चाहते हैं, ठीक है, बट कैसे लेंगे? इफ यू कैन एक्सप्लेन, because last 10 days back I have seen on the newspaper Lodha has sold more than 500 units, right? So Right. explain to all our customers how real estate industry is responding during the lockdown. So frankly, so out of those 500, Mukesh, you just mentioned, we have more than 15 projects in MMR. But in Amara alone, we have sold out of that 500, 150 homes. So 30% is the sales by Amara, in fact. So there is a very, very strong traction we are getting. We used to get roughly per week 400 inquiries every week, okay, before lockdown. Now we are getting close to 700 inquiries every week, Mukesh. You will be surprised to know. So this is the kind of traction which is there, because there are not enough developers in the market, in Thane, who are providing RTMI ready to move in kind of homes. So it is very, very scarce in supply, and we are really offering it at never before prices with the kind of offers that we are offering, and there is a huge interest in home buyers. Yes, I completely agree. If I talk about my sales team, Lodha Group एक ऐसा ग्रुप है जिसने when lockdown started and they started giving virtual experience to their customers. ठीक है. अभी others builders ने जो है they are following the Lodha कि how Lodha is doing. So if I talk about house seekers, we have also done more than 1500 virtual presentations. And if I talk about process, how we are doing. So firstly, our sales team is doing profiling of the customer. After profiling of the customer, they are helping to shortlist the project. Okay, so after shortlisting the projects, if I talk about Lodha, Amara, Thane, so what our team is doing, after talking with the customers and after understanding the requirement, they are aligning the meeting with the closing manager from Lodha, Amara, Thane projects. So closing manager is asking to, because every family, all family members always join the meeting. So closing manager is helping to show the inventory and showing 360-degree view. ये तो पहले क्या होता था before lockdown, when customer comes at the site, they see the inventory, they see the location, then they go back and discuss with the family. But through video conferencing, so all these things are making our life easy. मतलब अभी क्या है, अभी right now we are watching कि more than 100 customers are watching this webinar, so they are understanding. Few family members are also joining, so they are taking complete experience. So it helping us to take the decisions very fastly. So this is the way we are getting response, and this is the way and all real estate industries are following this way. And that's the reasons every developers also started selling because of this virtual experience. Thank you, Mr. Sachin, for sharing your views. So now this is the time to take view from Mr. Vivek Nair. He's a realty expert at Lodha Amara Thane projects. So now I will request Mr. Vivek to explain about Lodha Group and what Lodha Group is offering to all our customers in Lodha Amara projects. Yes, Mr. Vivek. Right. Thank you, Mukesh. Good evening to everyone on this call today. It's a pleasure to speak to all of you, and I'm really happy to see so many participants today on this call. That itself shows the kind of interest people have in buying homes, or you're looking at real estate as an investment. So thank you very much. So we move forward, and just to tell you something about Lodha Group. So
Lodha Group's vision is to build a better life. So we believe in giving lifestyles to people. We believe in building lifestyles. We don't believe in building houses with bricks and cement. And that's an example which you can see with all our ready developments, that we build a better lifestyle for our clients and the home buyers. So I'll take you through a video on Lodha Group. India has emerged as the only trillion-dollar economy to be ranked as the fastest growing economy in the world today. One name that shines the brightest in the real estate industry is Lodha, India's #1 real estate developer and the pioneer of branded real estate in the country. With a 39-year-old tradition of richly contributing to the urban development of India, addressing the ever-rising demand for high-quality housing and office spaces, combined with an innovative marketing and sales strategy, Lodha continues to be one of the most respected real estate brands in the country. With total sales of over 71,630 million rupees in the fiscal year 2018-19, Lodha has proudly been India's #1 residential developer for the past 6 consecutive years. Lodha Group's relentless commitment to quality and delivery has paid off. 19,670 homes have been delivered in the past 2 years, out of which 15,800 homes were delivered before time. That is, every 4 out of 5 homes were delivered before time. Lodha has huge land banks in India and the United Kingdom and approximately 41 ongoing projects across Mumbai, Pune, and London as of June 30th, 2019, which further strengthens its leadership in the real estate space. Lodha Group has extended its vision of building a better life overseas and set a mark in the United Kingdom with the acquisition of the iconic McDonald House from the Canadian government for a whopping £300 million. Along with One Grosvenor Square, Lodha is also developing Lincoln Square, a masterpiece located in central London's historic and educational heart. Imagine being immersed in the finest living experience that India has to offer. Well, Lodha Group has made that dream turn into a reality with its iconic project, the World Towers, an architectural marvel of our times. Setting the benchmark for 21st century urbanization in India, Lodha Group is rapidly developing Palava, India's #1 smart city in the Mumbai metropolitan region. With over 32,000 homes sold in just 9 years, the Greenfield development is one of India's fastest growing cities. Continuing its leadership in the residential real estate space in India, Lodha Group has successfully expanded its asset classes to office spaces, logistics, and retail. As of 31st March 2019, Lodha Group has completed approximately 5 million square feet of Grade A offices across the Mumbai metropolitan region. Lodha has consistently set the benchmarks for quality by partnering with top international firms to deliver the best from across the globe to its customers. Lodha Group believes in working with the best, a reason why the company recruits the best talent from the top B schools and top multinational corporations. Today, just the name Lodha adds prestige to any address. It evokes respect and reflects achievement and continues to grow as the future unfolds in front of us. As India's #1 real estate developer, Lodha Group is significantly contributing to India's emergence as a global power and is well poised to capitalize on its attractiveness as a preferred destination for real estate investment in the eyes of major institutional investors and NRI buyers. So, if you're looking to buy a residence or lease office space, come home to the best. Come home to Lodha. So great. I hope all of you like the video, and in a nutshell, we tried to show you what all Lodha is into.
So as we saw in the video itself, so we are not just building iconic structures, but as I said earlier, also we build a better life. Some of the examples of this lifestyle living is at as you can see the pictures, Palava City, Dombivli. We have Lodha Amara, on which I will be taking you in detail today. It is in Thane. We have the Trump Tower, which is in Worli. We have New Cuff Parade, which is an iconic address now in Vadala. So just to give you a snapshot of what all we are into and what all are the projects which are ongoing and the upcoming residential projects. So as you can see the map, right from Altamont Road, where we have the very premium project Lodha Altamont, till on the western side, if you see, we have Lodha code name Golden Ticket, which is in Mira Road. If you see central Mumbai, we are there in Andheri, Lodha Eternus, and on the other side, if you see on the harbor, we are there at Vadala, New Cuff Parade. Thane, we have got many projects. Lodha Amara is one of them. I'll be speaking about it in detail. And Dombivli, we have got Lodha Palava, and Taloja, we have got also our projects present, which are ongoing. So moving forward, as I said, we have been delivering dreams. अगर आप देखें तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं मार्केट में, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है डिलीवरी. जब आप घर बुक करते हो तो आपको एश्योरेंस ये होना चाहिए कि आपको घर मिलेगा, और यही पॉइंट पे बहुत सारे डेवलपर्स मार खाते हैं. बहुत सारे लोगों को काफी बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इन टर्म्स ऑफ राइट टाइम डिलीवरी, और probably many of the people have been getting delayed homes. But in our case, 4 out of 5 homes were delivered before time. And not only that, the kind of volume that we have been delivering, 16,000 plus homes in the last 2 years. इतना सारा डिलीवरी कोई भी डेवलपर ने शायद मुंबई एमएमआर में नहीं किया होगा जितना हमने किया है. So, moving ahead. इसी वजह से कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस हम पे बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव 20% मार्केट शेयर इन एमएमआर. इन एमएमआर इफ आई टॉक, 1 out of every 5 होम्स इज अ लोडा होम व्हिच इज गेटिंग सोल्ड. लेकिन थाने में, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसका आज हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, थाने में जो मार्केट शेयर है लोडा का वो 30% है. मतलब 3 घर बिकते हैं, उसमें से एक घर जो है लोडा का होता है. सो 1 out of every 3 होम इज अ लोडा होम व्हिच इज गेटिंग सोल्ड इन थाने. That is the kind of command that we hold on the Thane market. We already spoke about this. Even in lockdown, the clients have been showing their trust and confidence on us. 500 plus homes have been sold across Lodha projects, and within Thane we have sold 150 plus homes. इसके अलावा समय काफी कठिन था लास्ट 2 महीनों में, तो from our side we did a lot of things which we could do to help the society. 20,000 meals were being served across multiple locations to the needy people. We were one of the first to waive off the rental for all our shops in our retail boulevards. Lodha World School जो है, उसमें भी हम लोग पूरे एमएमआर में हम लोग पहले थे जहाँ पे स्कूल फीस का जो हाइक होता है एवरी ईयर, उसको हमने रोल बैक किया फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, लुकिंग इनटू द काइंड ऑफ सिचुएशन. So as you all know, the best gift that you can give your family is a home. Last 2 महीनों में, 3 महीनों में जिस तरह का सिचुएशन है, हमने रियलाइज किया है कि कितना इम्पोर्टेंट है घर होना, और एक अच्छा घर होना, सेफ एंड अ वेल मेंटेन्ड होम is so important in our lives. So moving ahead, so what should your home have? So it should help in giving you good health. It should be safe and secure, which is so important now, and obviously it should have good amenities. So I present to you अपना घर अपना देश, जो कैंपेन हम चला रहे हैं. थोड़ी सी हमने जानकारी स्टार्टिंग में दे दी. It's a never seen before kind of campaign. It's a unique campaign. कोई और नहीं कर रहा है इसको. You must have seen the video by our brand ambassador Mr. Akshay Kumar. And कितना इम्पोर्टेंट है घर होना. मतलब अगर कोई सुपरस्टार हो या कोई आम आदमी हो, घर कितना इम्पोर्टेंट है उससे आपको पता चल रहा होगा, and everybody has realized. So just to give you the salient features of what is अपना घर अपना देश. So
the important benefit for a customer for booking Apna Ghar Apna Desh, a home in Lodha, is that in our projects you just pay 1,98,000 and nothing more. I'll tell you more about it. Lowest rate of interest 5.99%. मार्केट में कहीं भी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जो हम आज ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ लोधा में 5.99%. इसके अलावा देश के लिए जैसे हमने पहले भी बताया, so every home creates 10 jobs. It contributes to 25% of the taxes, which also helps in building the nation. Every home that you buy, 21,000 out of it goes from Lodha's pocket to PM CARES Fund to support the warriors who are fighting COVID-19 today. तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे काम में देरी क्यों, थोड़ा सा हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ. So in Thane itself, we have got 4 projects. One is Lodha Amara, that is in Kolshet Road, Casa Viva, which is in Majivada, Lodha Sterling, which is in Kolshet Road, and codename Rare Gem, which is in Majivada. So moving ahead. So location जिसकी हम बात कर रहे हैं थाने है. प्राइस, आपको पूरा प्राइस रेंज मिलेगा, मतलब आज अगर आपको 56 लाख से लेके 4.5 करोड़ तक के रेंज में कुछ भी देखना है, so we are there to help you for that, and we have ready to move in and under construction as well. So क्या ऑफर्स हैं अपना घर अपना देश में? जैसे कहा मैंने पहले, 5.99% का जो इंटरेस्ट रेट है, लोएस्ट एवर इन द मार्केट टुडे. reduced initial payment scheme, मतलब कम से कम अमाउंट दे के आप अपना घर बुक कर सकते हैं and the remaining will be taken care of. So 21,000 जो जाता है PM केयर फंड में, इसकी भी हम बात कर चुके हैं. Moving ahead, so let's have a look at Amara, our project, on which I'll be talking about the other details after this video. Hi, I'm Ashish. I work with Accenture, designated as Vice President Operations. My name is Krishna. I work with LinkedIn as a Global Account Manager. My name is Sujana. I'm a French professor. I'm from Northeast Assam, Guwahati. I work for a corporate bank as an Assistant Vice President in Human Resource. Hi, myself Akash Bhardwaj. I'm working as a banker. I work for Union Bank of India. Location is quite well connected. It's very near to the highway, so like moving around is faster. The main thing which I feel is it's quite greener, quite open space. So whenever you come out of your home or you are on a break, you are not in office, it's quite relaxing, you can breathe fresh. When I visited for the first time in Amara, I felt like being in a resort. Initially, it was our apprehension that how Mumbai would be and how we will be able to gel with people. But it was welcoming that the first day itself we saw our neighbor very nicely inviting us. So that's something which really gave us a warm welcome. I love each and everything about this place. Right from the moment my car enters the Amara premise and when I walk to my wing. So there are kids playing in the pool at the pavilion. So the whole feel to it is very nice. Quite safe, like you have all the securities available. They issue gate passes whenever someone visits. You get a email notification. So it's quite safe. I love to sit here in the clubhouse area, the open area where you have sit out. That is something looks good to sit and discuss if you wanted to meet some friend there or work on your any assignment of the office. I wanted a place, a peaceful, nice place to deliver my baby. So I have a 6-month-old baby now, and I think it's the best place where I can raise my child.
amenities, which is gym, or even the forest area which recently opened up, which my son is just loving it, and he's just insistent that he should be going there every second day. One of the amenities which I like personally is the theatre. Last weekend we have seen 2 movies, and tomorrow we are planning to watch Kesari, right? Yeah. I can see that there's a lot of space for the kids to grow up, lots of greenery, the parks and everything. It's also for my parents also, they also love the place. We are from Northeast, we like mountain trees. So this is the place, very peaceful. Once you come back from the long tiring day, you want to come back home. It was a very happy sight when I discovered a good bunch of enthusiastic folks playing on that enclosed box with a very well laid out cricket pitch. So that was around the time the IPL season was there as well, and pretty recently Amara concluded its own Premier League. So that's really has been a fantastic experience. I run across, so the entire periphery is mine, so I definitely run. So in nook and corner of the community, I run and explore places, and then definitely I use gym. Amenities we use is swimming pool and especially badminton court. We love it. I must say, this place offers more than what I had expected. Satisfying. Overwhelming. It's very peaceful. Close to nature. In one word, it's superb. Nirvana, a perfect definition of home. So now I'll be taking you through the project Amara. So Amara is the finest neighborhood in prime central Thane. So moving ahead, can we move ahead? Okay, so talking about the location. So why we are calling it prime central Thane is that if you see this, if you see the location on Kulshet Road, currently Amara is on one side. If you see your right hand corner of the screen is where the Amara project is already delivered and people are staying there. You heard the customer who have bought Lodha homes giving their testimonials about the kind of lifestyle they are enjoying in Amara. On the opposite side, अगर आप देखेंगे सामने की साइड पे ये आपको जो दिख रहा है हमारा 8 एकड़ का जो लैंड पार्सल है, उसमें हम 3 टावर लेके आ रहे हैं. एक लोधा सुप्रीमस जो एक कमर्शियल टावर है और 2 लोधा आई थिंक, अगेन ये दोनों भी कमर्शियल टावर हैं. So 3 commercial towers will be operational there. Already Lodha Supremus, Lodha I think को OC मिल चुका है and the people have started occupying it. Due to the lockdown now it has slowed down, but once we open up, the lockdown opens up, people will start working here. So you can understand the entire area will be so buzzing with activity. उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो there is a F&B hub. So 1 लाख स्क्वायर फीट का हम जो है रिटेल F&B hub बना रहे हैं. So this place will be so lively. There will be a lot of people also from this commercial complexes, also from outside where people will be coming to this F&B hub. So उसके अलावा सामने के साइड अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे हमने मेंशन किया है लोधा स्टर्लिंग जो हमारा प्रीमियम प्रोजेक्ट है which is inspired by London living, वो आ रहा है. So this entire area, why we are calling it Prime Central Thane, is that probably in the next few months this area will transform into the next big hub of Thane. तो ये जो है सेंट्रल थाने की तरह या प्राइम सेंट्रल थाने हो जाएगा once all this is operational and live. So that is the reason we are saying that this is the upcoming and very, very potential area now. Talking about the homes, what we offer is, so it is very thoughtfully designed. It is fully air conditioned. So all the rooms will have the air conditioned, pre-fitted. We have space efficient kitchen. I will come to the layout later. You will be able to understand that. High quality bath fittings, marble flooring, wardrobe niches. अब इसका क्या मतलब है? Because we don't want the bedroom areas to get wasted by you putting wardrobe in the existing area. So we have already made niche जहाँ पे अपना wardrobe रख सकते हैं और आपका space maximum utilize हो. Utility area, again I will go to it once I go to the layout. Moving ahead. As I said, already we have delivered the project in the first phase and people are living here. और हमारा club house जो है fully functional है. 25,000 स्क्वायर फीट का हमारा मेन क्लब हाउस है. 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस पूरे थाने में और कोई डेवलपर आज के दिन में नहीं ऑफर कर रहा है जो हम कर रहे हैं. इसके अलावा 6 क्लस्टर क्लब हाउसेस
मतलब अगर आपको अपने टावर से क्लब हाउस तक भी नहीं जाना है तो आपके टावर के नीचे भी एक क्लस्टर क्लब हाउस होंगे, ऐसे 6 क्लब हाउसेस भी हैं. There is a 1,000 square feet gym for people who are interested in fitness. We have indoor courts, we have lap pools, we have poolside cafe and a party venue also. And all this is shot on location. These are live, these are pictures which are actually from the location. If you can see this, the outdoor swimming pool, infinity swimming pool. Next. This is the indoor swimming pool. It's a temperature controlled swimming pool. अगर किसी को मतलब आउटडोर में नहीं जाना है, किसी लेडीज को या प्राइवेसी चाहिए किसी को, तो देन देयर इज अ इंडोर स्विमिंग पूल व्हिच इज अगेन टेम्परेचर कंट्रोल्ड. Kids play area. This is again indoor if the kids want to enjoy indoor playing activities. This is the indoor games room where we have table tennis, carom, chess and all the other indoor activities can be done here. Again, this is delivered short on location. Next. This is the indoor badminton courts. As you can see, again indoor, so people can enjoy this even in the rains. They want to practice, they want to maintain their fitness. This is there indoor. थिएटर कम ऑडिटोरियम, आपने वीडियो में देखा एक फैमिली बता रही थी कि दे हैव बीन वाचिंग एवरी वीक द मूवीज इन द थिएटर. सो दिस इज अगेन समथिंग व्हिच इज देयर इनसाइड and every week they have screening of latest movies which the people can enjoy within the complex itself. Next. So this is for the people who love reading and want some privacy while reading. We have a library cum cafe which is also, this is the pictures are also shot on location. Banquet halls, तो अगर आपको कुछ बर्थडे पार्टी करनी है, आपको कुछ छोटा सा फंक्शन करना है, we have our marriage halls. We have 2 halls where capacity can be in a theater style can be up to 150 people also. So basically अगर आप दोनों हॉल को यूज करेंगे तो 250 से 300 लोगों का तक का आप पार्टी कर सकते हैं. So that's the kind of facility आपके खुद के सोसाइटी में जो आपको मिल सकता है. Again, this is short on location. Now this is one big attracting thing which a lot of clients have loved. अगर आप देखिए तो बिल्कुल बढ़िया ग्रैंड स्पोर्ट्स एरिना है जिसमें आप फुटबॉल, आप टेनिस, आप रनिंग ट्रैक्स हैं जहाँ आप रन कर सकते हैं. Actually gives you a feel of a very good Olympic field. So this is how it looks. It is also shot on location which is live and functional today. So spiritual लोगों के लिए, so we in the complex itself, in the Amara, we have a Ganesha temple. We also have a Jain temple. Apart from this, we have meditation decks where people can sit and meditate, do yoga and other activities. और सबसे बढ़िया चीज जो ये पूरे प्रोजेक्ट में है वो है एक प्राइवेट फॉरेस्ट. आजकल घर में हैं, बट पहले अगर आप देखें तो लोग लोनावला जाते थे, माथेरान जाते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे ग्रीनरी एंजॉय करने के लिए. एंटायर अमारा इज ग्रीनस्केप, बट उसके अलावा हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एक प्राइवेट फॉरेस्ट आपके लिए 2 एकड़ का. इट इज अ 2 एकड़ प्राइवेट फॉरेस्ट. 2 एकड़ आप समझ सकते हो मुंबई थाने जैसे शहर में अगर कोई फॉरेस्ट बना रहा है तो आप समझ सकते हो कि हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ग्रीनरी को, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आपके लाइफस्टाइल में ये ग्रीनरी लाने के लिए. सो वी हैव नॉट लाइक एनी अदर डेवलपर वुड हैव प्रोबब्ली बिल्ड 2-3 टावर बन जाते हैं 2 एकड़ में, लेकिन हमने वो नहीं किया. इसको हमने प्रिजर्व किया है. ये नेचुरल फॉरेस्ट है 2 एकड़ का. ये कुछ पिक्चर्स हैं वेयर पीपल कैन एंजॉय. देयर आर ट्री हाउसेस. Yeah, so we have tree houses within the private forest. आपके वुडन ट्रेल्स हैं जैसे आप देख सकते हो फोटो में. आप चल के पूरे फॉरेस्ट का आप एंजॉय कर सकते हो. So that is the kind of forest that we have built where the kids can enjoy, the elders can enjoy, anybody can go and visit a mini hill station forest within the community itself. So इसके अलावा एक जो हमने लाइफस्टाइल लोगों को दिया है, और दूसरा होता है जब आप घर में रहते हैं, जब आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं,
तो आपको लगता है कि आपके नेबर्स, आपकी जो कम्युनिटी है जो आपके साथ रह रही है, वो कैसे हैं। तो थोड़ा सा झलक मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. लेट्स हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ कम्युनिटी दैट इज ऑलरेडी लिविंग एंड थ्राइविंग इन अमारा. तो अगर आप देखें, सो वी हैव रेगुलर फेस्टिवल्स. Every 2 months, 3 months, there is some of the other festival in Amara, and one of the photo that you are seeing is of the Amara Utsav, where the live band was performing, audience was enjoying, and all these people are residents of Amara. ये बाहर के कोई लोग नहीं है, Amara के सारे residents थे, उन्होंने enjoy किया. आगे बढ़े तो this is another activity, another very important event that happened, barbecue night. तो ये भी जो प्रोफेशनल्स थे बारबेक्यू बनाने के लिए, उनको इनवाइट किया गया था, एंड दे हैड मेड द बारबेक्यू नाइट सो एंजॉयबल फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ अमारा. नेक्स्ट, गरबा नाइट जो हुआ था, सो दैट इज अनदर वन फेस्टिवल which was celebrated with very a lot of enthusiasm by all these residents. Next, Christmas party. Again, you can see all the residents having a very gala time here. एक और बढ़िया इवेंट हुआ था मास्टर शेफ, जिसमें सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, रेसिडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जिसके जज रिनाउंड शेफ्स थे आईटीसी होटल से, वो आए थे, उन्होंने जज किया था और उन्होंने विनर डिसाइड किया था. तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंजॉयबल इवेंट विद इन अमारा वंस अगेन. इसके अलावा अगर ये सब सारी बातें हो गई कि अंदर क्या एमिनिटीज हैं, लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, अगर मैं जरा से बाहर आऊं और कम्युनिटी मतलब गेट के बाहर की बात बताऊं, सो अमारा को लग के ही, मतलब विद इन दिस इज पार्ट ऑफ अमारा प्रीमाइसेस ओनली, आउटसाइड वी हैव अ रिटेल विच इज अगेन फुली फंक्शनल एट योर डोर स्टेप. मतलब अगर आपको ग्रोसरी लेना है, कुछ सामान लेना है, कुछ दवाई लेनी है, कुछ लेना है, तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं. आपके गेट के बाहर आइए और आपको ऑलरेडी these stores are already functional, as it is mentioned. Apollo Pharmacy है, Enrich Salon है, HDFC ATMs है, ATM है, Eden Supermarket है जहाँ से ग्रोसरी वगैरह आप ले सकती हैं, Dick Krebs Cafe है, and शिव सागर रेस्टोरेंट है. So you have everything which somebody would need immediately. जो घर के बाहर निकलते ही तुरंत लोग देखते हैं, ढूंढते हैं, खरीदते हैं उनको, which is there available just outside at your doorstep. सो ये हो गई भाई हमारा की बात. तो आपने देखा बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया लोग इसमें रह रहे हैं. दे आर एंजॉयिंग अ ग्रेट लाइफस्टाइल विद ऑल एमिनिटीज एंड ऑल फैसिलिटीज विद इन एज वेल एज आउटसाइड, एज आई शोड यू. अब आगे बढ़ते हैं अबाउट द प्लान्स एंड द प्राइसिंग एंड द ऑफर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु हैव जॉइन्ड इन टुडे. सो ये टिपिकल फ्लोर प्लान है. तो 6 फ्लैट्स हैं हमारे एक फ्लोर पे ब्रॉडली, जिसमें 1 और 2 बेड का कॉम्बिनेशन रहता है. सो आपको जो चाहिए होगा वो आपको डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल ऑफर यू इन आवर टावर्स. दिस इज द फ्लोर प्लान, हाउ द फ्लोर लुक्स विद द 6 अपार्टमेंट्स. वी विल गो अहेड एंड सी द यूनिट प्लान सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरह का घर मिलेगा आपको. कैन वी मूव अहेड? ओके. सो ये है आपका यूनिट प्लान जो 1 BHK का है. सो जितने लोग 1 BHK में इंटरेस्टेड हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लीजिए. सो वी हैव, एज आई इन द बिगिनिंग इटसेल्फ वी हैव टोल्ड यू दैट वी हैव प्लान्ड इट सो वेल दैट अगर आप देखिए 1 बेड में भी आपको L शेप का लिविंग कम डाइनिंग रूम मिलता है, जो नॉर्मली 1 बेड में बहुत सारे डेवलपर्स में या बहुत सारे आप देखेंगे, आपने देखा होगा मार्केट में, ये नहीं होता है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखिए एंट्रेंस पे फॉयर है. नॉर्मली अगर आप दूसरे डेवलपर्स का और भी देखें, कुछ और 1 बेड्स देखें, स्पेशली 1 BHK, उसमें फॉयर स्पेस नहीं होता है, सीधा एंटर होते ही आपका घर शुरू हो जाता है. लेकिन इसमें एक फॉयर स्पेस है जहाँ पे आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब अगर आपका शू रैक रखना है या कोई चीजें रखनी है, तो देयर इज अ स्पेस फॉर दैट आल्सो. एज आई सेड, इट्स अ L शेप लिविंग कम डाइनिंग. इट्स अ वेरी स्पेशियस 9 by 10 into 14.4 living room with a dining space of another close to 8 into 7.5 का आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है. किचन पे अगर मैं जाऊं तो किचन अगर आप देखेंगे तो इट्स अ
parallel kitchen that you have, which is very much required in nowadays as a requirement for housewives also. Parallel kitchen है, एक आपका working platform है, एक आपका cooking platform है. Again we have a spacious bedroom of 10 by 9 by 10. इसमें भी जैसे मैंने पहले कहा, it also has your wardrobe niche. मतलब अगर आप एक wardrobe रखना चाहते हैं तो आपके bedroom का space कम नहीं होता है, because it is a separate wardrobe niche that we have provided. So that is another well-planned way that we offer you our units. As I had mentioned earlier, also we have a utility area. तो जैसे अगर आप देखेंगे तो can we go back to one bed again? So टॉयलेट के बाद अगर आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे टॉयलेट के बाद यूटिलिटी स्पेस भी है. तो कई बार क्या होता है, वन बेड में यूटिलिटी स्पेस नहीं होती है, तो किचन में ही आपको अपनी वॉशिंग मशीन या यूटिलिटी सामान सब आपको फिट करना पड़ता है. बट हियर देयर इज अ सेपरेट यूटिलिटी स्पेस आल्सो. सो अगेन दैट इज अ बिग एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर दिस वन बेड यूनिट. या वी कैन मूव फॉरवर्ड. टू बेड का अगर आपको प्लान बताऊं तो अगेन very well planned 2 bed. You have a foyer once you enter. There's a kitchen. Again, it's a L-shaped living cum dining area that you have. Kitchen में advantage अगर आप देखें तो इसमें एक store भी है. So you can store your required essentials and everything in the store room, which is part of the kitchen area. When we move ahead from the living area, there is a separate niche. लुकिंग इनटू टू बेड कस्टमर्स के अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो हमने एक पूजा रूम की तरह हमने एक स्पेस दिया हुआ है जो 4.5 बाय 3.6 का एरिया है. ये आप पूजा रूम की तरह यूज कर सकते हैं, या कुछ आपको स्टोर या कुछ और चीज़ों के लिए आपको यूटिलाइज करना है, यूटिलिटी रूम की तरह यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं. बेडरूम इज मास्टर बेडरूम इज क्वाइट स्पेशियस. इट इज 11.5 by 10 का आपका मास्टर बेडरूम है with the master toilet. You have the second room which is a 10 by 10, and you also have a utility area in this particular unit also, which is part of the common toilet. So this is about the 2 bed plan. So moving forward, the pricing part. So सब आपने देख लिया how the apartment is, how the amenities are within the community, how the community is. So moving to the carpet area, so 1 bed 472 carpet and the agreement value is 69.9 lakhs. We have a 2 bed Optima, smaller version of the 2 bed large which I showed you, the unit plan which I showed you, उससे थोड़ा छोटा 585 carpet है. जो प्लान मैंने आपको यूनिट प्लान दिखाया वो 672 carpet का था, जिसका प्राइस है 99.9 lakhs, which is agreement value. You have a 2 bed Ultima deck, जिसमें आपको डेक एरिया मिलता है, बालकनी मिलता है, जिसमें से आपके व्यूज जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं. ये बालकनी अपार्टमेंट्स हमने इस ऐसे टावर में रखे हैं जिससे एक साइड से आपको फॉरेस्ट व्यू मिलता है और दूसरे साइड से आपको जो स्पोर्ट्स एरिना मैंने दिखाया उसका व्यू मिलता है. सो इट्स द मोस्ट प्रीमियम टावर एंड इट इज अ बालकनी टावर. 735 का कारपेट है, स्क्वायर फीट कारपेट है, 112 यानी 1 करोड़ 12 लाख का उसका वैल्यू है. वी हैव अ 3 बेड विच इज 955 कारपेट एंड 145 इज एग्रीमेंट वैल्यू. तो ये प्राइसिंग है. इसके अलावा जो हमने पहले बात की, आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलते हैं 5.99%. आई एम श्योर आप सब ने काफ़ी इंक्वायरी की होगी आज रेट्स क्या हैं. नोबडी इज ऑफरिंग 5.99%, तो दैट स्ट्रेट अवे गिव्स यू अ बेनिफिट इन योर EMI. मूविंग अहेड, देयर इज अ रिड्यूस्ड इनिशियल पेमेंट स्कीम जो हमने बात की अगर अपना देश कैंपेन में. इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले स्लाइड पे, इसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलती हैं. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है और बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो घर देख रहे हैं. तो पहले अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट की बात करता हूं और एग्रीमेंट वैल्यू पकड़ता हूं, जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में आपको बताया कि 1 बेड का जो एग्रीमेंट वैल्यू है 69.9 लाख है. अगर आप 85% अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, 85% एज्यूम करते हैं कि इसमें से आपको लोन मिलता है. ओके, तो प्री लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन होने के पहले जो आपका EMI होता वो रहता, लॉकडाउन के पहले 8.5% के आसपास का रेट चल रहा था मार्केट में, तो आपका EMI रहता 46,750.
लेकिन अभी आरबीआई ने रेट कट किए हैं, कुछ रेट्स कम हुए हैं, लेकिन हमने उससे भी ज्यादा रेट कट किए हैं। हमने आपको बोला है कि हम आपको 5.99% पे आपको आपका कराएंगे, विच गिव्स यू अ स्पेशल ईएमआई ऑफ अपना घर अपना देश, दैट इज 35,673। तो अगर मैं एक दूसरी तरीके से इसको देखूं तो आज के दिन में अगर कोई रेंट पे रह रहा है, सपोज उसका रेंट है, अगर मैं अमारा की ही बात करता हूं तो आज के दिन में अमारा में 1 बेड का रेंट 20 से 22,000 के रेंज में चल रहा है। सो 20 से 22,000 रुपए आप रेंट पे दे रहे हैं, जहां आप बिल्कुल अपना एसेट भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम नाउ बिकॉज ऑफ अपना देश इतना नजदीक हो गया है, रेंट वर्सेस ईएमआई, मतलब एक टाइम पे आपका रेंट वर्सेस ईएमआई डबल था। मतलब आप 22,000 का रेंट दे रहे हो, आप 46,000 रुपीज का, मतलब डबल से ज्यादा आपका ईएमआई बनता था, तो थोड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन आज के दिन में आपका ईएमआई जो है 35,000 रुपीज होगा, विच इज ओनली स्ट्रेचिंग 13,000 एक्स्ट्रा फ्रॉम योर करंट एक्सपेंसेस, विच बिकम्स अ वेरी वेरी फेवरेबल स्कीम फॉर यू टू थिंक कि मैं रेंट से अपने खुद के घर में जाना चाहूंगा कि नहीं। सेकेंड इज अगेन, अगर 2 बेड की बात करूं तो पहले प्री लॉकडाउन 65,000 रुपीज का ईएमआई बनता था, 85% अगर इस पे लोन दिया जाए तो। लेकिन आज 50,000 से भी कम ईएमआई में आप अपना 2 बेड घर ले सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, it should be a very very important point that you should consider to now move to your own house. Other point is, so can we move forward? The other point was the lower initial payment. तो lower initial payment से क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले अगर आपको 1 बेड का घर लेना था, जिसका प्राइसिंग मैंने आपको बताया 70 लाख 69.9 का एग्रीमेंट वैल्यू है, तो आपको 6 लाख रुपए जो है इनिशियल पेमेंट करना पड़ता था, प्लस आपको स्टैम्प ड्यूटी करना पड़ता था, जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वो करने पड़ते थे। सो इसमें क्या होगा कि अब जो है हमारे अपना घर अपना देश में हमने इसको 2 लाख कर दिया है। आप सिर्फ 1.98 जो हमने पहले मेंशन किया था, इट्स अ राउंड फिगर ऑफ 2 lakhs आई हैव मेंशन्ड हियर। 2 लाख रुपए आप देके अपना घर आप बुक कर सकते हो, और उसके ऊपर फिर आपका बाकी का जो अमाउंट है वो हम टेक केयर करेंगे, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा। सो दैट इज द स्पेशल इंसेंटिव बाय गिविंग अ लोअर इनिशियल पेमेंट। तो आज के दिन में शायद आपके पास पैसा है, बट यू डोंट वांट टू पुट इट एट वन गो, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर फुल मनी बिकॉज यू वांट टू प्रोबेबली कीप अ इमरजेंसी फंड विथ यू। लेकिन ये स्कीम के आने की वजह से आप अपना इनिशियल अमाउंट भी कम दे सकते हैं। सो आपका ईएमआई भी कम जाएगा, आपका इनिशियल अमाउंट भी कम जाएगा। सो ये सारी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको अभी मिलती है अपना घर अपना देश ऑफर में। So let's move forward. Thank you so much, Mr. Vivek, to explain the projects in very nicely manner. So now I will request Mr. Sachin. Mr. Sachin, the price Mr. Vivek has shown, this is applicable for all customers who are attending this webinar or not. So we already communicated to all our customers when they will join the webinar, so they will get some extra benefit. So I will request you to announce something extra for all our customers, because they already have given time from more than 1 hour. So right. I need to please announce something. Yeah, sure, Mukesh. So I think so. Thank you everyone for joining in. I think been very patient. I think for 1 hour they have been listening, but I think there is something very special for all these customers who have joined in here. That आपको सबको पता है कि जब आप घर खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी जो होता है वो कस्टमर पे करता है, ठीक है। सो तो अभी सिंस आप ये वेबिनार में ज्वाइन किया है, तो जो इनिशियल पेमेंट जो विवेक ने आपको बताया है वो 1 बेड के लिए 1.98 लाख और 2 बेड के लिए 4.99 लाख, वो ही सारा अमाउंट रहेगा। स्टैम्प ड्यूटी जो होगा वो लोधा आपके लिए भरेगा। सो अगर कोई कस्टमर 1 बेड खरीदते हैं, उनको खाली 1.98 लाख रुपीस देना है। कंपनी आप 1 कदम लेंगे, कंपनी आपके लिए 2 कदम लेगी और 3.5-4 लाख रुपए का जो स्टैम्प ड्यूटी है अपनी जेब से भरेगी। तो ये पहली बार ऐसा रियल एस्टेट में हुआ है। आज तक हमने
रियल एस्टेट में मैं बहुत टाइम से हूँ, विवेक तो मेरे से भी ज्यादा टाइम से हैं, बट और मुकेश आप तो सर हम सब दोनों से ज्यादा से टाइम से हैं। तो आज तक हम ये रियल एस्टेट में इस तरह का ऑफर नहीं आया है कि स्टैम्प ड्यूटी आपको जो है खाली 2 लाख रुपए में घर बुक करने के लिए मिल रहा है और कुछ पे नहीं करना है, सब EMI से होगा। थैंक यू सो मच। आई रिसेंटली बॉट माई होम, सो आई नो कि SDR का जो अमाउंट होता है वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट OCR, ठीक है, कि एक मिनिमम अमाउंट देने के बाद स्टैम्प ड्यूटी भी जो है कस्टमर्स को पे करना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग फ्री स्टैम्प ड्यूटी टू ऑल आवर कस्टमर्स। So, sir, just I want to ask my last question. Is there any validity for this free stamp duty? Yes, so ideally देखिए हम ये बोल रहे हैं कि इस महीने में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से लॉकडाउन खुलने के पूरे आसार हैं, तो ये जितना जल्दी लोग बुक करेंगे, बिकॉज ये एक्चुअली में लॉकडाउन ऑफर है, सो जितना जल्दी लोग बुक करेंगे उतना प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है और लिमिटेड कस्टमर्स के लिए है, तो ये सबके लिए नहीं है। मतलब जो पहले हमारे 27 कस्टमर होंगे उन्हीं के लिए है, तो इसलिए बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है। Thank you so much, Mr. Sachin. So we already received couple of questions from the audience. So this is the time to answer the queries. Already time has crossed. So I will request Mr. Vivek to answer the questions. Few customers are asking. So Mr. Ajay, he's asking, he wants to buy a home, and that home will be the first home in his life. So जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी जो है स्टार्ट किया था, this PMAY is applicable on your project? If yes, then how we can avail, how we can take advantage of this? Yeah, Mr. Vivek. Okay, so absolutely you can avail of PMAY, that is Pradhan Mantri Awas Yojana, for our projects. It is our project comes as a part of Pradhan Mantri Awas Yojana. आप इसका लाभ उठा सकते हैं। The other very important thing, मैं सब लोगों को बता दूं, इतने सारे लोग हैं इसमें आपके ये हमारे वेबिनार में, that गवर्नमेंट ने मई 14 को, इस महीने 14th मई को एक्सटेंड कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना। सो अर्लियर इट वाज सपोज्ड टू बी क्लोज्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही मार्च 2020 में, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉट एवर सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू इन द कंट्री, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड इट टिल द नेक्स्ट ईयर, दैट इज मार्च 2021 तक एक्सटेंडेड है। सो एक चीज होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है अभी भी, इट इज कंटिन्यूइंग इन आवर कंट्री, एंड सेकंड इज दैट अमारा it falls under PMAY, so you will get the benefit of PMAY. Thank you so much. And Mr. Vivek, you know, lockdown investors के लिए सबसे बड़ा opportunity है, तो काफी सारे investors है, they joined this webinar and they are watching, and already they are existing buyer. So few investors investing in our Lodha Palava City project, which is situated located in Dombivli locations. So investors always look for ROI, you know better. So Mr. Anil, and he's asking, he already invested in Lodha Palava City and looking more options. So he's asking, what is the location advantage of Lodha Hamara project? Right. So मैंने मेरे presentation में cover किया ये part को. I will once again repeat because it is very very important. Because क्या होता है, investors जब देखते हैं तो he looks at the potential. So जब आप even stock market के लोग बात करते हैं तो बोलते हैं multi bagger stock, मतलब या हाई पोटेंशियल स्टॉक, या मतलब उभरता हुआ सितारा जो बोलते हैं। तो अगर आप देखें ये जो एरिया है कुलशेत, ये उभरता हुआ सितारा है। मतलब 3 साल पहले जो माजीवाड़ा था, या 4 साल पहले, 5 साल पहले जो पोखरन रोड था, मैं बता रहा हूँ इन द नेक्स्ट 1 year, 6 months to 1 year probably, कुलशेत रोड विल बिकम, एज आई सेड, वी हैव यूज्ड द वर्ड प्राइम सेंट्रल थाने। ये थाने का सबसे सेंट्रल और इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा, और हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं इसको बड़ा बनाने में, बिकॉज as we have talked about, we are creating a Lodha business district जहाँ पे 3 कमर्शियल टावर्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो मेरा 8 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसमें 3 कमर्शियल टावर आ रहे हैं। एक उसमें F&B हब आ रहा है जो 1 लाख स्क्वायर फीट का है। मतलब लोग पूरे थाने से वहाँ आएंगे अपना F&B के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट एरिया बन जाएगा। सेकेंडली, इन्वेस्टर्स की अगेन मैं बात कर रहा हूँ, तो एक और पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो हमने एक लोधा सुप्रीमस का OC आ गया है और एक आई थिंक का भी OC आ गया है, और आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू दैट आई थिंक जो है उसमें हाफ ऑफ द टावर हैज बीन टेकन बाय अ
MNC company, you all must be knowing the name and heard of it, Deloitte. So Deloitte ने वहाँ पे मतलब आधा टावर ले लिया है. So you can understand the kind of people, the kind of gentry which is going to come and work in that area also. और उस तरह के लोग अगर जब काम करते हैं, और स्पेशली और उसके अलावा भी जो 3 टावर हैं जिसमें कमर्शियल में लोग काम करने आएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए? आइदर वो हमारा में घर खरीदेंगे या हमारा में रेंट पे रहेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से हमारा का रेंटल वैल्यू और हमारा का कैपिटल वैल्यू दोनों बढ़ेगा इन द नेक्स्ट. एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन ओसी फॉर योर आई थिंक एंड सुप्रीमस. 2 टावर की ओसी आ चुकी है. ये तो लॉकडाउन है इसीलिए थोड़ा सा टाइम हो गया, नहीं तो अभी लोग रहने आ गए, मतलब लोग काम करने आ गए होते और डिमांड ऑटोमेटिकली हमारा रेसिडेंस के बढ़ गए होते. So it's a very good time to invest in this particular area. It is the next big thing in Thane. This particular belt, Kolshet Road, will be the prime central Thane. So for an investor, it's the right time to get into this area if he's looking at investment. I completely agree, Mr. Vivek. And सचिन सर, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देंगे तो ऑडियंस को ज्यादा बिलीव होगा. प्रिया इज आस्किंग कि आपने जैसे इन्होंने ऑलरेडी 6 months पहले विजिट्स किया था, तो ऑन कंट्रीब्यूशन की वजह से ये बुक नहीं कर पाए थे. सो दे आर आस्किंग, कैन यू गिव, आप क्या इसको राइटिंग में दोगे कि 2 लाख रुपीस देके आपको यू कैन बुक योर होम एंड यू कैन मूव इनटू योर होम? Yes, but I mean, this is an offer which is there. So, I mean, obviously, provided your eligibility of loan happens. So, because when she visited 6 months back, she is saying कि तब आपने on contribution कुछ around बताया था, but now you are saying 2 lakhs. So, trust नहीं हो रहा है उनको. नहीं, तो I assure you ना, मतलब so Mukesh, you can give it on my behalf to everybody in writing that yes. I will request, if you want to book, then definitely we will drop your mail for this. Then you take the decisions. Yes. Okay. Thank you, Mr. Sachin. And few customers, Mr. Rakesh, he's asking because we are in lockdown and we all are sitting in our home, because you have given this lucrative offers and you have for 1 BHK you have to pay only 2 lakhs and for 2 BHK you have to pay only 4 lakh something, right? So if they want to book, and what is the token amount if they want to block the inventory and if they want to book the dream home? Mr. Vivek, can you answer this question? How much amount initially because after the lockdown they can visit this site, so they need to pay. Yeah, so what at a time they need some certain amount to block the inventory. Correct. So if anybody is interested, we will ये तो एक वेबिनार था, बट हम 1-to-1 प्रेजेंटेशन भी करेंगे ऑनलाइन, ताकि उनको और समझ में आए. इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल करेंगे, बताएंगे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, बेनिफिट्स हैं. और जो इनिशियल अमाउंट होता है वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम लेते हैं. इट इज ऑफ 51,000 रुपीज. Thank you so much. Means 50,000 customers has to pay and they can block the inventory. So right. After the lockdown, you will invite to all customers and you will, if they like it, then they will proceed for booking. Otherwise, if they want to cancel, then you will refund the amount. This amount is completely refundable. Am I right? Yes. Okay. Thank you so much. And a few customers are asking if we want to book and how we can check our loan eligibility, because all banks, we can't visit the bank. So is there any financial support from the side to check the loan eligibility? Yes. So we understand that while buying a home, 99% of the customers go through a home loan process, and hence we have our own individual dedicated team called Lodha FinCorp, जो ये सारी requirements handle करती है. वो जो भी client है उनको हम ऑप्शंस देते हैं कि हमारे पास सारे नेशनलाइज्ड बैंक, सारे प्राइवेट बैंक्स, NBFCs के ऑप्शंस हैं. कस्टमर को जहां से लेना है लोन वहां से ले सकता है. वी ऑल्सो टेल देम कि कहाँ से आपको सबसे बढ़िया रेट मिलता है. वी ऑल्सो टेल देम कहाँ से आपको सबसे बढ़िया सर्विस मिलता है, कौन से बैंक से. कस्टमर कैन टेक अ फाइनल कॉल. वी विल हेल्प देम एंड टू एंड फॉर द होम लोन or any financial requirement process in the process. And my last question, because we are bound on time and we have to finish this webinar. So अभी जैसे COVID-19 चल रहा है, ठीक है, we can't go outside, ठीक है. क्योंकि अगर मैं डेली नीड्स की बात करता हूँ, लाइक मिल्क हमको डेली चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स हमको डेली चाहिए. जो आपने जितना भी अपनी प्रेजेंटेशंस में मिस्टर अनिल इज आस्किंग कि आपने जितना भी अपनी प्रेजेंटेशन में जो पिक्स दिखाई है, आपने दिखाया था कि रिटेल शॉप्स आर ऑपरेशनल, फार्मेसी, मेडिकल इज ऑपरेशनल. तो ये सारी क्या लाइव पिक्स हैं या जस्ट दे विल ऑपरेशनल इन फ्यूचर? नहीं, ये बिल्कुल लाइव पिक्स हैं. ये जो रिटेल हमारा जो मैंने मेंशन किया, जितने भी नाम मैंने मेंशन किए,
सारे ऑपरेशनल हैं आज के दिन में। आप जाएंगे ये सारी दुकानें ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं भी होंगी, बट दे आर ऑल देयर इन प्लेस एंड दे वर ऑपरेशनल बिफोर द लॉकडाउन ऑल्सो. So your pharmacy and your grocery, your supermarket must be functional even today, now also. Yes, Mr. Anil, all these things are operational and everything is ready. Your neighborhood is ready, right? Thank you so much, Mr. Vivek and Mr. Sachin, for giving your time, giving your precious time. Thank you so much. And I will say sorry to my customers because I am unable to pick all questions. We are bound on time. So हमारा जो time था वो 1 hour का था. Now more than 15 minutes we have crossed, and still more than 90 customers are watching this webinar. So, but yes, I assure after this webinar, our sales team will connect with all of you and will address every query. And after this, I will show the screen. On this screen, you can note down mobile number and email ID. You can drop a mail. Again, I want to repeat if you want to proceed, what is the process? Our sales team will connect with you. Yeah, you can connect. You can drop us a mail to schedule a meeting. So our sales team will align your meeting on basis of requirement with the closing manager. After aligning the meeting with the closing manager, they will show you the inventory, which inventories are available on basis of your requirement. If you like it, we will block the inventory. We will share you the bank account details. You can do the NFT. You can do the IMPS. We have online payment link also. You can also pay from your card also. And after doing the payment, you will get the confirmations your inventory is blocked. When lockdown will open, we will invite you at this site. We will show each and everything at this site. Where is your tower and where you are booking it. If you like it, then we will give you time to pay for the next payment. Then we will proceed the booking. If you don't like, you want to cancel it, we will refund your amount. Am I right? If there is any change, Mr. Vivek, is there any change in this process? You're right. You're right. Okay. So you have to follow this process. And one more important thing, Mr. Sachin has given us special offers, which is completely 0% stamp duty. ये आज तक कभी लोधा हमारा में नहीं हुआ है, ना ही थाने के किसी भी प्रोजेक्ट्स में हुआ है. वो भी एक सबसे बड़ा बर्डन रहता है, जो कि स्टैम्प ड्यूटी जो है बैंक कभी भी लोन नहीं देता है. ये हमेशा हमारा ऑन कंट्रीब्यूशन का पार्ट होता है. तो ये भी जो हमारा बर्डन है लॉकडाउन में, वो भी हमारा रिड्यूस हो गया है. बट येस, दिस ऑफर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मंथ एंड. टुडे इज 28 एंड टुडे इज थर्सडे. इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे. तो मेजरली संडेज तक सभी वर्क करते हैं, संडे को लीव होता है और मंडे को सभी वर्किंग में आ जाते हैं. So we have only 4 days to grab this offer. If you want to grab this offer, drop a mail and we will align your meetings. Thank you so much giving your time, and again thank you so much Mr. Vivek and Mr. Sachin for giving your precious time. Thank you so much. Pleasure. Thank you very much. Thank you so much.